Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. Okay, students, today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 28 of Civics, Understanding Laws. I know you people are having so many queries regarding this, like why there is a need to understand laws, or why laws are so much important for us, or why do we need laws? Some of you might ask, ma'am, what is the meaning of law? And who is enforcing it on us? So, don't you worry, students. In fact, you people are very lucky that we are having a complete chapter in which we are going to discuss and answer these questions. That is chapter number 28 of Civics, Understanding Laws. Now, before moving on to the chapter, let us consider one ground example. Okay, that why do we exactly need law? So we all know that we are having certain rules or regulations in traffic. We have to follow certain traffic rules and regulations. Like we have to wear helmets, we have to drive slowly, we have to wear seat belts while driving, or we should not use cell phones while driving, and so many. Now the question is, why are we following these rules and regulations? Or what if we stop following these rules and regulations? Students, if we stop following these rules and regulations, then it will lead to accidents, conflicts, chaos, disputes, delays, as you can see in the video. And surely you don't want this thing to happen. Therefore, there are certain traffic laws just to avoid such kind of circumstances. No doubt, laws are restricting us to use something or to just do something, but at the same time it is also stopping others from doing anything which is against us. So students, we really need laws, and laws are very important for us. That's what we are going to study in this chapter. So with that said, let's roll the intro. Good morning, students. So let's start with a new chapter of civics, that is chapter number 28, Understanding Laws. So here's a brief content as to what we will be reading in this chapter. First, laws and need for them. Then the rule of law. Historians refute the claim that British introduced the rule of law. Attempt by Indian nationalists to fight for equality. Lawmaking procedure. How a bill becomes a law. How a new law on domestic violence passed, bad and unpopular laws, and voters' role in opposing unpopular laws. Students, I know that there are so many topics in this chapter, but each and every topic is very short. So it is not given that much explanatory. Each and every topic is shortly explained. It is briefly explained, so there is no need to worry. It's not going to be a lengthy chapter. Okay. So let's start with the very first topic, laws and need for them. Okay, let's start with the meaning of laws and then their needs. The first thing is meaning. The body of rules and principles governing the affairs of a community and enforced by a political authority are called laws. If you remember this topic, students, we have studied it earlier also, when we were doing chapter number 24, the Constitution and its key features. And today also we'll be discussing this topic. So just divide this definition, this particular meaning, into three parts. Body of rules and principles, then governing the affairs of a community, and then enforced by a political authority. So we'll be dividing this particular definition in three parts. ठीक है, body of rules and principles means here we are referring to certain rules and regulations. ठीक है, then governing the affairs of community means those rules and regulations which keeps a check on affairs or simply whatever happening in the society. So those rules and regulations which keeps a check on the affairs
or the matters that are happening in a society enforced by a political authority. Enforced by a political authority means those rules and regulations which keeps a check on society, and these rules are made or enforced by a political authority called parliament. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से लॉज वो रूल्स हैं जो किसी भी सोसाइटी पर अप्लाई होते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ना हो, और ये रूल्स बनाए किसने हैं? पार्लियामेंट ने। तो वो रूल्स जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी ने बनाए हैं, और वो सोसाइटी के ऊपर लागू किए जाते हैं जिससे कि कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन, डिलेज, डिस्प्यूट्स ना हो, उन रूल्स रेगुलेशंस को लॉज कहते हैं। सिंपल टर्म्स में वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए वर्क कर रहे हों, जो सोसाइटी के मैटर्स, जो भी सारे मैटर्स होते हैं उन सारे मैटर्स, उन सारे अफेयर्स पे अप्लाई होते हों जिससे डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ना हो, और अप्लाई करने वाला कौन है इनको? पार्लियामेंट। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अप्लाई किया है पार्लियामेंट ने एक सोसाइटी पर, जैसे हमारी सोसाइटी हो गई या पूरी कंट्री पर, ऐसे कर करके एक सोसाइटी पर, जिससे कि उस सोसाइटी में डिस्प्यूट्स, डिलेज, कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस क्या हो? कम हो, तो उनको क्या कहा जाता है? लॉज। The body of rules and principles governing the affairs of a community and enforced by a political authority। ये डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते ही बहुत ईजी हो जाती है डेफिनेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी कम्युनिटी के मैटर्स की देख रेख करते हैं, उस पर स्ट्रिक्ट विजिलेशन रखते हैं, और किसने एनफोर्स किया गया है उस रूल्स और रेगुलेशन को? किसने एनफोर्स किया है? पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, जो कि है पार्लियामेंट। समझ आ गया? चलो नीड पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। लॉज की नीड क्या है? क्यों लॉज इतने इंपॉर्टेंट हैं? वाई डू वी एग्जैक्टली नीड लॉज? ठीक है, वो क्वेश्चन है। पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट हैविंग सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, केओस होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिले होगा, और ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए लॉज इंपॉर्टेंट है, लॉज होना जरूरी है। ठीक है, लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अ सोसाइटी एंड टू स्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी। सोसाइटी में पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए लॉज इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया नीड ऑफ लॉज एंड मीनिंग ऑफ लॉज? अच्छा, अब ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप रूटेड इल्स कैन नॉट बी अपरूटेड ऑल एट वंस। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी डिसेबिलिटीज जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, वो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स एक बारी में डिमिनिश, एक बारी में इमेंसिपेट, एक बारी में रिमूव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमको लॉज की नीड होती है। If still there are certain social and religious customs in a society, it should be removed as soon as possible, otherwise it will become a hurdle in a progress of society। अगर अब भी वो डिसेबिलिटीज़ जो हमारी सोसाइटी ने सफ़र की थी, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, सती सिस्टम हो गया, डाउरी, इन्फेंटिसाइड, अगर ये डिसेबिलिटीज़ रिमूव नहीं की गई, अगर ये डिसेबिलिटीज़ अपरूटेड मतलब जड़ से नहीं उखाड़ी गई, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? यस, ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए हर्डल बनेगी, या हमारी कंट्री या सोसाइटी का प्रोग्रेस होने से रोकेंगी। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर लॉज आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिविंग और टेकिंग डाउरी, डाउरी मीन्स दहेज, गिविंग और टेकिंग डाउरी इज बैंड इन इंडिया, एंड still if you are practicing this custom you will be put behind bars. These laws put restrictions on people who are still thinking of committing these evil practices. ठीक है, समझ आ गया? So this is all about the meaning and need or importance of law.
ठीक है, समझ आ गया लॉ का मीनिंग और नीड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, द रूल ऑफ लॉ. चलो अब रूल ऑफ लॉ का क्या करते हैं, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं. एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करती चलूंगी मैं, ठीक है. ईच एंड एवरी पर्सन, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है हम वो पढ़ रहे हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इज इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज इक्वल बिफोर लॉ. सारे लॉज हर एक इंडिविजुअल पर इक्वली अप्लाई होते हैं. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री इज इक्वल बिफोर लॉ. हर एक इंडिविजुअल लॉ के सामने क्या है, इक्वल है इन आवर कंट्री. ऑल लॉज अप्लाइज इक्वली टू एवरी सिटीजन्स. सारे लॉज हर एक इंडिविजुअल पर इक्वली अप्लाई होते हैं. अगर हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बात करें तो ये लॉ भी हर एक इंडिविजुअल पर इक्वली अप्लाई होगा. नोबडी इज अबव लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो हाई अथॉरिटी हो या वो लो अथॉरिटी हो. ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ. इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इक्वल बिफोर लॉ. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ. पीवी नरसिम्हा राव जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम 1991 टू 1996. He was the Prime Minister of India from 1991 to 96. अब इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद भी उनके ऊपर एक कोर्ट केस चला था, बट बाद में वो नॉन गिल्टी माने गए. बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, जब तक चार्जेस लगे हुए थे उन पर, वो कोर्ट भी जाते थे, वो एविडेंसेस भी शो करते थे. तो ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नोबडी इज अबव लॉ. समझ आ गया. फोर्थ पॉइंट, any crime or violation of law has a specific punishment and nobody can avoid it. अगर लॉ को वायलेट किया है तो उसकी अपनी ही पनिशमेंट होगी. या तो पेनल्टी हो सकती है, चार्ज हो सकती है, फाइन लग सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट. जो भी होगी हमको उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन जजिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ. लॉ वैलिड है या नहीं है, किसी ने लॉ को ब्रेक किया है नहीं किया, सारे प्रोविजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. द सुप्रीम कोर्ट इज द कंट्रोलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई भी लॉ वायलेट किया गया है तो वी हैव टू बी आंसरेबल टू द कोर्ट, टू द सुप्रीम कोर्ट. समझ आया. सो बेसिकली रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ. सिंपल लाइन है. रूल ऑफ लॉ मतलब ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ. नो मैटर इफ यू आर अ prime minister or you are just a normal government servant, you are equal, you both are equal before law. If you are violating any rule and regulation, you also will be treated in the same manner just like a prime minister. मैंने आपको पीवी नरसिम्हा राव का एग्जाम्पल बता दिया है. So this shows that each and everybody is equal before law in independent India. समझ आ गया रूल ऑफ लॉ. अच्छा, जब जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होएगी तब राइट टू इक्वालिटी की बात तो आएगी. ठीक है, ऐसा थोड़ा हो सकता है राइट टू इक्वालिटी की बात ना आए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में भी हमने पढ़ा था ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ. सो राइट टू इक्वालिटी एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ राइट टू इक्वालिटी, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया में ईच, वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वही लाइन लिखी हुई है कि हर एक इंडिविजुअल बिल्कुल इक्वल है, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं. लॉ के सामने ईच एंड एवरी वन इज इक्वल. और अगर किसी की राइट्स को वॉयलेट किया गया है तो लॉ के सामने वो क्या माना जाएगा, वो विक्टिम माना जाएगा, और जो गिल्टी होगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी. वो अवॉइड नहीं हो सकती पनिशमेंट. ठीक है. इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ ऑफ लैंड. ये मैंने आपको वही कहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, मीन्स द सेम थिंग, नो वन इज अबव लॉ. समझ आ गया. ठीक है. बट you all know exceptions are always there, and these exceptions we'll be doing in our next lecture. So stay tuned for that. That's it for today.
I hope you understood whatever I have taught you today, the meaning of law, then why there is a need to understand law, then what is the meaning of rule of law, means each and everyone is equal before law, and exceptions we'll be doing in next lecture. Test time question: laws are important for the smooth running of society. Do you agree with this statement? A, yes, or B, no. You have to tell me, either you choose yes or either you choose no. Do you agree with this statement? Yes or no? You have to tell me in the comment section. Okay, the answer. Okay, for your homework, for your classwork, you have to do the key terms. If you are not having book, I'll be providing you it in PDF. Okay, if you are having book, then it's good. Then exercise D, question number first, you have to do why are laws so important in a democracy, and this is the answer. Firstly, we have explained the meaning. I've told you the meaning of law because it might come in 1 mark question, define law. So it's better for you to learn the meaning as well, then why it is important, these 3 points. So this is the answer of question number first of exercise D. Students, now you all know that you have to comment the answers directly. There is no need to go to the description box. So I really want each and every one of you to answer me. It will hardly take 1 minute to answer me if you have seriously studied everything whatever I have taught you in this video. So please participate, okay, in the test round. That's it for today. I hope you understood everything, and if you have any doubts or queries, feel free to ask me. Thank you and bye-bye.